Can you please tell us what are you representing here about your country? Assalamualaikum viewers, welcome in my channel Travel and Food Scanner. जी व्यूअर्स, तो हम लोग मौजूद हैं इस वक्त श्रीलंका पवेलियन के बाहर। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं श्रीलंका का पवेलियन कैसा है अंदर से। ओके, यहाँ पे व्यूअर्स फ्री कॉफ़ी और टी फॉर्म की जा रही है। यहाँ पे मेंशन है वाटरफॉल्स, इतने सारे श्रीलंका में हैं। ब्यूटीफुल। यहाँ पे ले सकते हैं आप कुछ पिक्चर्स, इसमें अपना फेस शो कर श्रीलंका की टी बहुत मशहूर है, तो जनाब यहाँ पे चाय के बागात भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा स्पाइस डिफरेंट। यहाँ रखें श्रीलंकन कुछ शर्ट्स और ड्रेसेस। यहाँ उन्होंने अपनी कंट्री घुमाई है, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त कंट्री है श्रीलंका। Hello, welcome in my channel. Can you please tell us what are you representing here about your country? Okay, so Sri Lanka is all about hospitality. So that's number one that we represent here is hospitality. Every time we have somebody walking who are our guests, we ask them for a nice cup of Ceylon tea. We have 7 ranges. And then we take them a walk around here. We ask them to sit. Our main focus is tourism. So we actually show them what Sri Lanka is all about. Okay. So like I said, number one, hospitality. And then everything else that Sri Lanka has to offer. Sri Lanka is a very simple but highly natured country, or an island rather. So we are promoting that we have retained our wildlife, we have retained our greenery, we have retained what our beaches are like. And you know how Sri Lanka is, the advantage of being a small island. And in a matter of 5 hours from the coast, you can go up to the hills into the cold areas. So you know that's a huge advantage. So lots of people are wasting minimum time on roads. So promoting all of that. Our beaches are spectacular. Our sceneries are spectacular. Please come, please visit, and be mesmerized by the island. Okay. So what's your expectation with Expo 2020?
our expectations are already met. Expectations of Expo 2020 is like the whole theme is creating mind, connecting minds, creating a future, and that's exactly what's happening. So Expo 2020 has been amazing for us, and I'm sure for everybody else. ओके, थैंक यू वेरी मच। इनसे मिला है स्मॉल क्यूट सा गिफ्ट। जी व्यूअर्स, तो हमने लिया है पेशन फ्रूट और ये जनाब ट्राई करते हैं, काफ़ी यम्मी और फ्रेश लग रहा है। के साथ ही अपनी दुआओं में हमें रखें याद। मिलते हैं एक नए और एक्साइटेड एपिसोड के साथ, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें क्योंकि आपकी राय है हमारे चैनल की पावर। अल्लाह हाफिज़।